स्लो करने का क्या तरीका बताया उन्होंने? 2 ले लो, 2,500 आएगा। Good morning guys and welcome back to season 3 of Rides and Adventures. Before I say anything, I just want to extend a big warm thank you to all the people who have been with me in my previous journey in season 2 जिसमें मैंने राजस्थान को पूरा कवर किया था. Extra big thank you for people who have watched my first season as well, जो कि लद्दाख था. थर्ड सीजन के अंदर हम लोग जा रहे हैं to a completely new state, to a completely new cities जो हमने आज तक चैनल के ऊपर कभी कवर नहीं किया है. It is going to be a super amazing experience. That's what I'm expecting. खुद को मोटिवेट रखना पड़ता है, बाकी चीज़ें मैं आपको रास्ते में बताता हूँ. So it is 8:15 in the morning and we are covering a completely new state, and the state we are going to is Gujarat. So the overall plan is कोना कोना छान के आना है क्या है गुजरात में. So जो मैंने रूट चूज़ किया है उस रूट में अपन नीचे वाले हिस्से से जाएंगे, यानी कि वाया अहमदाबाद महुआ होते हुए अपन उखा की तरफ जाएंगे. That's like a big picture, but I think आपने जहाँ अगर मेरे वीडियोस देखें तो आपको पता ही होगा. डेस्टिनेशंस आर वेरी सब्जेक्टिव. कई बार किसी इमरजेंसी की वजह से कभी अच्छा लग गया तो अपन बीच में पॉज ले लेते हैं या फिर डेस्टिनेशन से आगे निकल जाते हैं. सो या राइट नाउ द करंट आइडिया इज आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन, I mean to reach the first destination, and it is Ahmedabad. So let's go. So currently I've already passed Udaipur. I'm a bit too excited. What I wanted to mention was I have always been traveling towards mountains. तो अब क्या है कि अपन पहाड़ों को छोड़ के अब जा रहे हैं समंदर की तरफ. एंड मैंने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च किया, द काइंड ऑफ प्लेसेस आई एम गोइंग टू विजिट, वहाँ पे और क्या क्या है. एंड एडिशनली वहाँ का फूड, they tend to make quite sugary. I mean, you know, दाल तो मीठी, कड़ी तो मीठी, खाखड़ा फफड़ा. So I'm honestly quite excited to visit that place. इसका मैंने like, you know, it took me a lot of time to plan and implement it. Honestly बता रहा हूँ, प्लान तो हो जाता है लेकिन इम्प्लीमेंट जब करने की बारी आती है ना तो थोड़ा यूँ होता है कि मतलब ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ भी मैंने देखा है, प्लान कर लेंगे लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं. लकीली मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, तो all these adventures I get to have. Recently I have been asked this one question. It was very vaguely asked. The question was, आप रिकॉर्ड करने के लिए घूमते हो क्या? I told him it's mirror opposite. मैं घूमता हूँ इसलिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ. So बस it's just the coincidence कि मैं घूमता थोड़ा ज़्यादा हूँ. This is one thing I wanted to mention. Since I'm going to, मतलब मैं कोना कोना चाट के आने वाला हूँ गुजरात का. So the big picture is, अगर if you want to see what's in the Gujarat and you want to experience it at the comfort of your home, stick to the channel. I think आप जानते होंगे videos come every Wednesday and every Sunday.
and I'm trying really hard to stick to that schedule, and let's hope I will be able to do this in the future as well. Abhi currently I think I will be able to provide 2 videos in a week, though it's a lot of work, but it's fun to do it. I get to learn a lot of things as well. Whoa, it's a very easy distraction for me. If I see the mountain, just expect me to leave everything and look at it. They just get my attention. So majestic, even though it's just so small, but what to do. We are crossing Kherwada and the route seems to be pretty smooth, decent. तो अब मैं यहाँ से थोड़ी भगाने वाला हूँ गाड़ी को, so we could like cover a longer stretch in like the least amount of time. So by now you must have already noticed, now I have a GoPro with me, extra GoPro. Earlier I was using Insta360 जो कि इस जगह पे लगा हुआ था, एंड जिसने मेरा पिछला सीज़न देखा है उनको पता होगा कि एंडिंग में क्या हुआ था. इट वाज डिज़ास्टरस. बहुत बड़ा खर्चा, मतलब एक चपत लगी थी मेरे. उसके बाद वापस से कैमरा ख़रीदना, एंड देन इट टुक मी सम टाइम, बट या आई गॉट बैक. So we are now a little more close to Ahmedabad, and I saw this nice lake, so I thought why not slow down a little. उदयपुर को छोड़ते ही जैसे ही बाहर निकले व्यूज़ एकदम चेंज हो गए. उदयपुर इज़ लाइक ऑल माउंटेन्स एंड लेक्स. अब यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट्स आना स्टार्ट हो गया है. आफ्टर माई एक्सीडेंट एट जैसलमेर I'm pretty much able to walk now. Oh wow, see, स्लो करने का क्या तरीका बताया उन्होंने. टूटी हुई कार लगाई है. राजस्थान का जो टूर लिया था उसके अंदर मैंने आपको लास्ट में बताया था कि मैंने उसको पैचेस में लिया है. लाइक एक अभी लिया, एक उसके बाद लिया, एक उसके बाद लिया. आई वॉज नॉट राइडिंग थ्रू आउट द टाइम, बट एक इधर का ट्रिप लिया, एक इधर का ट्रिप लिया, एंड देन आई कंपाइल्ड इट ऑल टुगेदर. बट जो गुजरात का ट्रिप है, दिस वन इज़ गोइंग टू बी जस्ट लाइक लद्दाख. लद्दाख के अंदर मैं एक बार में निकला और मैं पूरा घूम कर आया था. तो गुजरात इज़ गोइंग टू बी द सेम वे. मैं एक बार में निकला हूँ और अब मैं पूरा घूमने के बाद ही घर जाऊँगा. देर आर फ्यू डेस्टिनेशंस दैट आई एम गोइंग टू लीव फॉर अ लिटिल लेट दिस ईयर, बट आई एम गोइंग टू कवर दैट टू. Probably those destinations are going to be Surat and Daman, I think. Daman, yeah. So अभी रास्ते में Diu आएगा, so which is a different place. People call it Diu and Daman. Of course, it is Diu and Daman, but that specifically सूरत के नीचे जाने के बाद जो जगह है, that is Daman. So I'm going to cover it later. On this road, I'm completely focusing on safety, and it has started getting windy. हवा के थोड़े तेज़ थपेड़े आ रहे हैं. लेट्स होप द ऑडियो इज़ कमिंग अप राइट. वन थिंग आई जस्ट रियलाइज्ड, दिस रूट इज़ प्रीटी गुड टू. मतलब हाईवे स्ट्रेट है, अच्छा है, एंड देन सी दीज वैली काइंड ऑफ रूट्स. आई ऑलवेज लव सच रूट्स. एंड कस्टर्ड एप्पल्स, शरीफा बिक रहा है यहाँ पे, और टूटी हुई कारें रखी हुई है. इट इज़ डेफिनेटली वर्किंग फॉर मी. आई एम नॉट ड्राइविंग फास्ट, barely at 70. राजस्थान की रोड्स की तो तारीफ़ तो करनी पड़ेगी. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है थ्रू आउट द टाइम. इवन व्हेन आई लाइक पिछले सीज़न के अंदर भी इट वाज प्रीटी अमेजिंग, और इस सीज़न के अंदर भी लाइक व्हेन आई एम ट्रैवलिंग टुवर्ड्स गुजरात, द रूट इज़
like not just the route being scenic, but the roads are pretty good as well. Alright, so officially Rajasthan की सीमा ख़त्म हो गई, and we are now entering in Gujarat. It's the border, actually, state border. I think it is now the time when I should stop somewhere, because out of excitement yesterday I did not sleep quite well. I think 4-5 घंटा something, and now I feel like, you know how excitement and everything thoda sa makes you, I don't know what's the word for it. I'll just have a nice cup of tea and then I'll continue my journey. Sir, chai. Okay, 30 rupees. Arre baba. So I'm currently somewhere in between Ratanpur and Modasa. So I'm still somewhere around 2.5 hours away from Ahmedabad. अभी तक का रूट काफ़ी अच्छा रहा है. आई एम एक्सपेक्टिंग आगे का भी अच्छा रहेगा. और luckily it seems like the weather god is with me today. It's quite sunny, just the kind of weather that I enjoy. It's not very cold, it's not very hot, and the highway seems to be pretty open enough तो आप आराम से गाड़ी चलाओ उसके ऊपर. And then the views are scenic. I'm already so pumped up, but currently I came to यहाँ पे Honest brand के काफ़ी सारे restaurants हैं. So I've stopped here for a little tea break to have some chai, and then I'll continue my journey. Honest brand honestly is quite famous for its reputation. Just now I had a cup of tea and it was pretty nice. But I mean, I got tempted by fafda क्योंकि वहाँ पे रखा हुआ था, and it's like something I would want to try after coming to Gujarat. But the thing is, the first fafda that I want to have should be locally made. मुझे वो hi-fi वाला नहीं चाहिए. I want how local people make it and how do they enjoy it. So definitely वहाँ जाने के बाद अहमदाबाद पहुँचने तक I'm going to keep searching some stalls जहाँ पे मुझे एक authentic traditional यहाँ का मुझे एक फाफड़ा ट्राई करने को मिले, and let's see how it tastes like. Of course I do have the idea because हर जगह पे मिल जाता है आजकल. But then again, when you go and eat the same thing at the place of its origin, उसका taste अलग आता है. And I want to try that. So I'm keeping that in my checklist that I want to try this. You will not believe it. I'm about to enter Gamhoi. Gamhoi ये अभी भी मैं करीब 100 किलोमीटर्स दूर हूँ अहमदाबाद से. But this place, all of a sudden the weather changed. It's hot. गर्म हो गया एकदम. और वो इतना हो रहा है कि like how do I inside I started sweating. I mean, you understand, I have a very good heat tolerance, and somehow right now, even while riding, I'm feeling hot inside. Now it is Basanti's fuel time, and there is something interesting I'll tell you now. Let me first check the price, and I was right. I'll tell you where I was right. Sir, petrol. अभी आप 500 का ही डालना. जी 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 500 का डाल देना. 500. हाय हाय.
कहाँ पे निकले? मैं पूरे गुजरात के टूर पे हूँ। ऐसा? ये आईडी है तुम्हारी? हाँ, ये अपना चैनल है। कैमरा चालू आपको दिख रहा होगा। व्लॉग में आता है क्या? लेट्स सी, मे बी आई ट्राई। एडिटिंग में चेक करते हैं ना। ओके, चलो बाय। I usually fill up Basanti at the beginning of the ride, but I know very well that राजस्थान के अंदर पेट्रोल का प्राइस 105 के आसपास रहता है, which is quite high, but गुजरात के अंदर it is only 95। तो अभी मैंने उससे सिर्फ लाइक 500 का मैंने इसलिए भरवाया, ओनली बिकॉज आई वांट टू सी कि जब अपन अंदर की तरफ जाएंगे टूवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ गुजरात, तो वहाँ प्राइस क्या चल रहा है। तो जितना अपन डीपर इन गुजरात अपन जाएंगे, क्या प्राइस पे फ़र्क पड़ रहा है क्या। इफ़ इट इज़, तो उसके हिसाब से आई एम गोइंग टू लाइक फिल अप एंड प्लान माई जर्नी अहेड। तो बेसिकली अपन ने अभी पर लीटर वी ऑलरेडी सेव्ड 10 bucks। That's a pretty good news. I'm already running on a very strict budget, और ये 10-10 रुपए इकट्ठा करके I could have some luxurious item like a pastry or something. I don't know, but चलो सेविंग तो हो रही है। Interesting, people are selling अमरूद on the highway, but वो अंदर से रेड वाले अमरूद हैं। वाह, see? It feels like the universe is telling me, try one, eat one. I'm going to have my food first and then maybe I'll think about it. अमरूद क्या heavy होता है and then you get filled with it, पेट भर जाता है। And it is already 10:52, very close to my lunch time. I usually prefer to eat somewhere by 11 or somewhere in between 11 and 12. So nothing heavy before that. Sir, ये क्या रेट है अमरूद? 60 का था। अच्छा, ये अंदर से पिंक है ना? पिंक वाला कौन सा अंदर से? सारे पिंक वाले ही हैं? पिंक वाला ये है, ये लाल वाला। अच्छा, मुझे खाली एक पीस चाहिए, कितने का दोगे? बस एक पीस ले, वो ले लेना 500 आपसे। क्या? दो ले लो, 2-500 आएगा। 2-500 आएगा मतलब? आधा किलो। ना अपने एक ही खाना है, मुझे टेस्ट करना है। एक 30 रुपये का आएगा। एक अमरूद 30 रुपये का? I think the universe is again telling me not to buy from here. So good news, this highway is really good because there has been a shift in the sceneries. यानी कि पूरे हाईवे के टाइम पे they were like the change in like from the mountains to the flats. So yeah, I kind of like it. So we are almost there. We are just 50 kilometers away. I think the time has come when I should say I should learn more languages. बोर्ड के ऊपर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है। गाली लिखी है, क्या है क्या चीज़? कुछ खाने की चीज़ है, रूम का रेट है, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। So probably after reaching need to find the app that could translate. So if there is an app that you know that is good in translation, do drop in the comment box below, because it is going to be very helpful for me. And yeah, thanks in advance.
अभी तक मेरे हेलमेट ने इतने सारे कीड़ों को मार दिया है कि गुजरात इज गोइंग टू बी रियली हैप्पी। I believe they have done some sort of decoration. It's pretty nice. I mean at night ये तो पूरा टनल बन जाएगी। So I guess I was not wrong. The temperatures are really soaring. They are really high and it is bustling with people. So I got a hotel room and here it is. Very interesting thing happened. The moment I entered Ahmedabad, things started to change very quickly. So सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ही मैं अहमदाबाद में आया तो it was beautiful, रास्ता बहुत अच्छा था, इसे चमक चमक लाइटें लगी हुई थी। And as I progressed, मैं थोड़ा सा आगे निकला and I saw कि गाड़ी चलाने की जगह नहीं है। It was completely packed, heavily crowded. Maybe tourist season होगा और उस वजह से लोग आए हुए होंगे and I struggled like anything. Then I was looking for the hotel. अब जब मैं होटल को ढूंढ रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे चाहिए पार्किंग, you know, because of बसंती. Now to all the hotels that had parking were priced either 2000 or above, and all the places that had rooms below 1000 did not have the parking. It was a big dilemma. बीच में फंस गया मैं तो। Then I decided कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा again अपनी old strategy, थोड़ा सा सिटी के बाहर निकलते हैं। और जैसे ही मैं निकला वहाँ पे एक जगह मिली जो कि इन दोनों के बीच की है, which means I got the room under 1000 and though my bike Basanti is parked somewhere, I think she is not visible from here, but उन्होंने बोला है कि यहाँ पे एक रात को गार्ड आएगा, 2 गार्ड्स आएंगे and the motorcycle is going to be safe. You don't have to worry about it. So I'm a bit relaxed right now. I got the room and the city is very crowded. It is almost 2 o'clock right now. I was supposed to reach in 4 or 4.5 hours, but it took me like you know, इस room तक land करने के लिए it took me an hour extra. I need to show it to you on which route did I travel. So I have already marked it for you. I hope you remember this map. I'm using the same one right now. So from here we started. यहाँ से सीधा नीचे वाला 2 रास्ते आते हैं, एक तो ऊपर से आता है जाडोल के थ्रू और एक नीचे से आता है। So I took the bottom one. यहाँ से मैं आया and then I reached हिम्मतनगर। हिम्मतनगर से again I continued and then I reached Ahmedabad. Now Ahmedabad is here. Now and I did not find the room here, so I continued a little bit ahead and then right before Bavla. It's a kind of a village sort of thing. So if you like this video, give me a big thumbs up and subscribe down below, and then I will see you in the next video. Till then, bye bye.